Morning. Today topic is the structure of the ecosystem. तो आज एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम. Composition and organization of the biological communities and abiotic component constitute the structure of an ecosystem. By structure of an ecosystem we mean, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग स्पेसीज, नंबर्स, बायोमास, लाइफ हिस्ट्री एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस एसेट्रा. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि द क्वांटिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल्स सच एज द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एसेट्रा. Ecosystem is then the integrating unit consisting of the interacting plants, animals, and microorganisms whose survival depends upon the maintenance and the regulation of their biotic structure and the functions. The ecosystem is thus the unit or the system which is composed of a number of subunits that all are directly or indirectly linked with each other, and they may be freely exchanging energy and matter from outside. An open ecosystem or may be isolated from the outside in terms of exchange of the matter, and a closed ecosystem. Ecosystem show large variation in the size, structure and composition, etc. Now the ecosystem is the self-sustaining when three conditions are met. First is it must have the relative constant resource of energy. Sunlight supply the energy to most ecosystem. Second, energy must be converted by the living system into the chemical bond energy in organic molecules. Plants, algae and certain group of bacteria accomplish these through the process of photosynthesis. Third point, organic matter and the inorganic nutrient must be recycled for reuse. In the most ecosystem, this recycling is carried by the decomposers. Now, an ecosystem becomes the unstable when any of these three conditions is affected. For example, if the flow of energy from the sun is the distributed, photosynthesis is affected. Without the food of plants, other organisms and the plant themselves would die off. If the essential nutrients are unavailable or certain species die off, and ecosystems could lose in the ability to sustain itself. To remain stable, an ecosystem need to maintain a dynamic balance between the biotic and biotic factors. Now, ecosystem have the basically two types of components, the biotic and abiotic as describes. Now, the first point, the biotic components में क्या है, different living organisms constitute biotic component of an ecosystem and belong to the following categories. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है आपके पास, प्रोसेस प्रोड्यूसर्स है. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, विद इन एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रोड्यूस फूड देमसेल्फ. फॉर एग्जांपल, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड by the photosynthesis in the presence of the sunlight from the raw material like the water and the carbon dioxide. They are known as the photoautotrophs. Photoautotrophs का मतलब क्या है कि यानी कि ऑटो का मतलब सेल्फ, फोटो लाइट एंड ट्रॉप इज इक्वल टू फूड. There are some chemoautotrophs which are group of the bacteria producing their food from oxidation of certain chemicals. For example, क्या है, sulfur bacteria. Producers become the food and energy resources of the consumer. Now second is the consumers or a heterotrophic organism. Heteros का मतलब other and the trophs mean feeder. These organisms get their food by the feeding on other organisms. Consumers that feed directly on the producers are called primary consumers. Primary consumers are the food for the secondary consumers and they include animals, fungi, bacteria and some processed. Now they are following types. तो फर्स्ट में क्या है, हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या है, एनिमल्स दैट ड्राइव नियरली ऑल द फूड resources from the plants matter are called the herbivores. And in the forest, these are the insects,
amphibia, reptiles, birds, and animals. The herbivorous animals include, for example, hare, deer, and elephants that live on a plant life and they gaze on the grass or feed on the flies from trees. In grassland, there are herbivores such as the black buck that feed on grass. In semi arid areas, there are species such as the chinkara or the Indian grass eel. In the sea, there are small fish and live on the algae and the other plants. Now, second for the carnivorous. Carnivorous animals are secondary consumers, live on the herbivorous animals and they get most of their food from the eating the flesh of other animals. In other forests, carnivorous animals are tigers, leopards, jackals, foxes, and the small wild cats. In the sea, carnivorous fish live on other fish and marine animals. And animals that live in the sea range in the size from the microscopic forms to giant mammals such as the whale. थर्ड पॉइंट क्या है, ओमिवोरस. ओमिवोरस क्या है, दोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो क्या कहलाएगा, ओमिवोरस. एग्जाम्पल ह्यूमंस, रैट्स, मैनी बर्ड्स एक्सेट्रा. नाउ फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्राइवोर, यानी कि दोज ईट डेड ऑर्गेनिज्म. तो डेड ऑर्गेनिजम्स में अर्थवॉर्म, क्रैब्स एंड अर्ट्स. नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, डिकम्पोजर्स और द स्पेक्ट्रोट्रॉप्स. तो स्पैरो इट मीन्स रोटन एंड ट्रॉप्स फीडर एंड दीज आर द indisciplinary in any ecosystem as they break complex organic compound into the simple inorganic substances, thus making them available to the utilized by the producers for the synthesis of food material. Decomposers are a group of the organisms consisting of small animals like the worms, insect, bacteria, and fungi which break down dead organic material into the small particles and finally into the simple substance are used by the plants as the nutrition. Decomposers thus the vital function in the nature as without the nutrients and would be the tied up in dead matter and no new life could be produced. Second one हमारे पास क्या है, abiotic component. Various psychochemical component of the ecosystem constitute the abiotic structure. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड द सनलाइट, सोलर इंटेंसिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, वाटर एबिलिटी, सॉयल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा. सेकेंड पॉइंट केमिकल कंपोनेंट्स में क्या है, इंक्लूड द मेजर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक द कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा. एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे पास, FeMoZnCu. इट मीन्स हमारे पास आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है. सॉल्ट आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस like the pesticides and these physiochemical factors of the water, air and soil play an important role in the ecosystem functioning. यानी कि ये आज का टॉपिक मैंने बताया इकोसिस्टम है. स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में जैसे पहले भी डिस्कस कर दिया, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं. आपसे पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी क्या है, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गया, कंज्यूमर है. फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं और इसी तरीके से कंज्यूमर्स को डिवाइड किया गया है, जैसे हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस हो गया, ओमिवोरस हो गया या डेट टू ट्रीवोर हो गया. इसी तरीके से डिकम्पोजर्स में करने के बाद हमारे पास पॉइंट कंप्लीट होता है. तो ये आपके अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन कार्निवोरस क्या है, हर्बीवोरस क्या है, ओमिवोरस क्या है, या एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, कौन से केमिकल कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे. तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें अराइज होते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से, जैसे फोटो एटोट्रॉप्स बताया, तो व्हाट डू मीन बाय द फोटो एटोट्रॉप्स. तो आपको पता हो कि ऑटो का सेल्फ है, फोटो लाइट है, ट्रॉप फूड है. तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.